A unique case of belching of wind. Patient, a 36 years old lady. First consultation on 24 September 2012. The history and the symptoms. For about past 3 years, the lady used to get belching of wind on pressing on any part of the body from scalp to feet. She used to get swelling or puffiness on a part anywhere upon any part of her body with uneasiness. On pressing on the puffed up part, she used to belch up wind persistently for some time. She was very much distressed by this condition all these 3 years. Apart from the above complaint, she was in good health. This symptom was unique. I could not find the same in the repertory. So I searched it in Materia Medica, that is Encyclopedia Homeopathica. I hit on the remedy Mercurius iodatus, and the same in 30th potency cured the patient in 4 months. The last lot of dosage for a week was given on 23rd November 2012. Now listen in the ensuing video clip what the patient says. हाँ, अब आप बोलिएगा आपको क्या क्या हो रहा था और इलाज के बाद क्या हुआ। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे ये पूरे हाथों में सूजन आ जाती थी और जगह जगह पर जैसे क्लॉटिंग्स हो जाती थी, इकट्ठा हो जाता था कोई मांस, और गैस भर जाती थी जैसे पूरे शरीर में, कभी कहीं, कभी के साथ में, कभी कंधों पे, और दबाव तो डकारें निकलती थी। बहुत ज़्यादा दबाने पर डकारें इतनी डकारें, कई बार तो आधा पौन घंटा लगातार डकार मुझे आने लग गई थी। कहीं भी शरीर में कहीं भी दबाने से? हाँ जी, और कोई 2-3 पॉइंट है पर्टिकुलर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैस भरती थी। मेरे राइट साइड में बहुत ज़्यादा गैस हो जाती थी। पूरा ये दायां हाथ, दायां पैर, कंधों में या कंधे में भर जाती थी। इवन वो स्वेलिंग के रूप में दिखाई भी देती थी, मतलब इतनी ज़्यादा गैस हो गई थी। और जब से आपका ट्रीटमेंट चला है, कितने समय से था ऐसा आपको? ये मुझे तकरीबन 2 साल से, मतलब पहले से भी था लेकिन 2-3 साल से ज़्यादा बढ़ गई थी मुझे प्रॉब्लम। तो फिर उससे पहले जो इलाज कराया उससे कोई लाभ नहीं हुआ? उससे पहले मैंने एक्यूप्रेशर से भी कराया, गोलियां भी खाई, एलोपैथी भी ली, गैसेक्स वगैरह जो गैस की दवाइयाँ हैं, कभी घरेलू इलाज, मतलब इस तरह से करती रहती थी मैं, लेकिन कभी मुझे आराम नहीं। इससे आपके यहाँ आने से पहले मैंने एक्यूप्रेशर में भी करवाया इसका ट्रीटमेंट, वहाँ भी मैंने कम से कम 2-3 महीने इलाज कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। और आपके यहाँ तकरीबन मेरे को 5-6 महीने से मेरा शायद यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, लगभग 5-6 महीने ही हो गए होंगे, और तब से मुझे काफ़ी आराम है। मतलब जो मेरे ये हाथों में सूजन आती थी ये भी काफ़ी कम हो गई है। उंगलियों में डकार नहीं आते? हाँ जी, अब डकार ऐसे नहीं है, काफ़ी ख़त्म हो गए। ये जो जगह दबाने से आती थी ये ऐसे नहीं निकल रही है। मतलब मैं बिल्कुल कई बार छोले वगैरह ऐसी जो बादी वाली चीज़ें बहुत अवॉइड करनी पड़ती थी मुझे, और अब मैं फिर भी खा लेती हूँ। सब कुछ खा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल खुश हैं? बहुत। As far my knowledge goes, there is no pathological logic for this unique complaint. It seems to be of purely nervous origin. It is the beauty of the homeopathic therapy that such and many other complaints which have no pathological logic are being cured permanently by this system of therapy. The case presented and produced from his records by Dr. S.K. Mamgin, Doon Ratn, Gadwal Gaurav, Gold Medalist, Veteran Homeopath, etc., Mamgain Homeo Clinic, 218 DL Road, Dehradun, 248001, India.